That is me. Huh? Hello, good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Very few students are there. Why so? You're not getting link or what? Every day the same link is there, no? Yes, student. Yes, ma'am. Yes, ma'am. From the same link you people are joining, right? Yes. Every day one same link is there, so you should join by the same link. Today, who is there? Ritika. Good morning, Ritika. Good morning, ma'am. Ruturaj. Hi, Ruturaj. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Sahil. Good morning, ma'am. Samadhan. Good morning, Samadhan. Samadhan, are you there? Sarthak, Samadhan. Sarthak? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Sia, good morning. Good morning, ma'am. And Vaishnav. Vaishnav, good morning. Good morning, ma'am. Yes. First of all, happy Holi. Yesterday, actually, Holi was there, right? है ना? Today, आज कहाँ है? आज Billivan. धूलिवंदन है. आज कहाँ है धूलिवंदन? Hello. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. ओके, चला. होळीच्या धुलिवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. होळी धन्यवाद. असो काही असो, आपल्याला लेक्चर्स घ्यावे लागणार आहे ना. तुम्हाला अभ्यास करावा लागणार बिकॉज very soon you have to give a very important exam of your life. Correct? So we'll start our today's session, that is Indian Polity Part 3. Fine. So again, as I told you, few questions we'll study, and from that question only, we'll come to know the different topics. Okay? So first question is there on your screen. Just go through that. And yesterday I gave some question homework. Indian polity का homework दिया था मैंने, याद है सबको? Sia, do you remember what was the homework? Sia? Sorry, ma'am, I don't remember. I told that time only to write it down here. Okay. Sorry. और किसको याद है? वैष्णव? Hello, ma'am. किसी को? येस बेटा, कुठे चालला जातोस मध्येच? मॅम होमवर्क बॅटल ऑफ प्लासी होता. ओके. बॅटल ऑफ बुक्सर. करेक्ट. प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट. बॅटल ऑफ बक्सर. आणि 2 पॉलिसीज सांगितल्या होत्या ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने ज्या इंट्रोड्यूस केल्या होत्या इंडियामध्ये. Subsidiary alliance and doctrine of lapse. करेक्ट. वेरी गुड. और ये That was- आपने वो भी बोला था राइट्स लिखने को, आर्टिकल्स करेक्ट. 12 13. जितने आर्टिकल कल क्वेश्चन में आए थे वो सारे याद रखने के लिए बोला था, राइट? सो प्लीज जब भी कोई होमवर्क दिया जाए ना तो आप कर लिया करो, बिकॉज सी राइट मीन्स दोज हु आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम आफ्टर लेक्चर्स.
जो ऑफलाइन में आते हैं स्टूडेंट वो सुबह 6 से रात को 8 बजे तक वगैरह बिजी है, उसमें हो जाती है उनकी बहुत सारी स्टडी। आप लोगों को जो टीचर सिखाते हैं उसके बाद आपका खुद का ओन स्टडी, सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? तो जब भी कोई टीचर बोले आपको कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवाइज करो, याद करो. एंड इट वॉज देअर. सिया, व्हिडिओमध्ये पण व्हिडिओ पुन्हा एकदा पाहिला असता तरी कळलं असतं बाळा काय होमवर्क आहे. मी ग्रुप मध्ये नाही आहे. नाही आहेस का? नाही, ऍक्च्युली मी आता जॉईन केलंय. ओके, फाइन. जस्ट टेल मी योर नेम, नंबर, सिया. Otherwise, on the same link, you're getting link, no? हा. Then how did you join the meeting today? Today's meeting? Mama, I had that link. One of the teachers sent that link. Acha. Fine. You are not there in that group. You should ask the person from whom you have taken the admission. That teacher will help you out for this. Yes. Otherwise, wait a minute. Okay. Just tell me your number afterwards. Ping me your number. Okay. Yes, ma'am. So that I'll ask. Otherwise, from whom you have taken the admission, na, that teacher will also guide you. Okay. So we'll start our today's session. Question is there on your screen. Fundamental rights in Indian Constitution have been taken from the dash. US Constitution. US Constitution. US Constitution. Why you feel that US Constitution must be there? There are British Constitution, French Constitution and Canadian Constitution क्यों नहीं हो सकता है? मैम वो रीड किया था मैंने. ये था ना आपको क्वेश्चन 10th में था कि 9th में था? मैम मैंने 8th के बुक में पढ़ा था. Oh, that's great. 8th की बुक में पढ़ा था वो आपको अभी भी याद है. That's wonderful. US Constitution is the correct answer. Okay, US Constitution is the correct answer. See, you can see. The fundamental right in the Indian Constitution have been inspired by the US Constitution. Correct. हमारा जो fundamental rights है Indian Constitution में वो US Constitution से inspired है. How many fundamental rights are there in Indian Constitution? Six. Fundamental rights in Indian Constitution. 6. Which fundamental rights are there? Do you know the names also? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, राइट? शॉर्ट नोट ऑन पर्टिकुलर वन फंडामेंटल राइट्स, राइट? Ma'am, 6 are there. Yes, correct. Absolute. Right answer is 6. Right to freedom of speech. Okay. Right to Right to equality. equality. Right. Right to equality. Then Right to freedom of religion, culture and education. Right to constitution. right to assembly. If you remember when Britishers were there, that time they used to not allow people to assemble, right? पता है आप लोगों को ये असेंबल होते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनको मारपीट होती थी, याद है? पता है, पढ़ा है ऐसे? हा मॅडम. राईट टू असेंबल. आणि त्याच्यासाठी एक फेस्टिवल सुरू केला गेला होता. कुठला फेस्टिवल सांगू शकाल मला कोणी? उत्सव. कुठला? गणेश उत्सव. एग्जैक्टली. एंड हु हैज स्टार्टेड दैट? किसने स्टार्ट किया था वो? लोकमान्य टिळक. करेक्ट. लोकमान्य टिळक, बाळ गंगाधर लोकमान्य टिळक यांनी गणेश उत्सव साजरा करायची सुरुवात केली. कारण त्यावेळेस ब्रिटिश काय करायचे की असेंब्ली ज्यांनी पण केली, म्हणजे असेंब्ली इन द सेन्स जास्त लोक एकत्र आली
की त्यांना ते लोक त्रास द्यायचे किंवा येऊ नाही द्यायचे. सो प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने ये फेस्टिवल की शुरुआत की थी. राइट. Fine. So our basic now question which we were studying, fundamental. How many fundamental rights? Basic 6 fundamental rights were there, like freedom of speech, right to practice any profession or any occupation, movement, association or union or assembly. फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं. उसी की वजह से मीडिया के ऊपर कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं. Okay. See, there are 6 fundamental rights. Okay. Next question. Which of the following article of Indian Constitution contains fundamental duties? And options are Article 40, Article 48, Article 51A, and Article 44. 51A. Article 51A. Fundamental duties. Anybody else? See, again, I'm telling many questions are there on the basis of articles. So please do remember, don't get confused. Article 51A is the correct answer, which says that, मैम yes, ईच आर्टिकल को ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, बहुत डीप में नहीं आएगा एसपीआई के एग्जाम्स के, वो एनडीए में आता है बेटा. एनडीए के लेवल जो होती है ना, उसमें डीप में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर थरो क्वेश्चन होगा जिसका आपको डीप स्टडी करने के बाद उसका आंसर होगा. बट फॉर एसपीआई आपको सिर्फ उसकी जानकारी चाहिए, कौन सा आर्टिकल है, बेसिकली बस किसके लिए है. ठीक है. आर्टिकल 51A भी होता है, आर्टिकल 51B भी है, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, इंडियन इंस्पायर्ड बाय इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल. बट इसका आंसर जो है आर्टिकल 51A है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fundamental. Article 51A contains fundamental duties. Which of the following are fundamental duties? Which of the following are fundamental duties? Now, fundamental duties and fundamental rights. Don't get confused in that. Okay. Properly पढ़ना है. Duty पूछा है कि rights पूछा है? Here they are asking duties. So which options are given out of that? Which is the fundamental duty? It's a simple answer, है ना? Who is this Redmi? Can you please write your name, beta? Duty to safeguard public property. करेक्ट. आंसर इजी है ना इसका, बाकी सब में राइट्स दिया है ऑलरेडी. एंड दे आर आस्किंग ड्यूटीज. ओके. ड्यूटीज, ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी अमंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. मतलब जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से यूज करना है, लाइक बसेस, ट्रेन and Indian heritage, everything we need to take care properly. That is our duty. Next question. Which of the following article of Indian Constitution contain the right to religious freedom? Article 15. Right to Article religious 15. freedom पूछा है बेटा. Oh, sorry. Article 25.
Sarthak, Sia, please give your answer. Pratham? No, who is this? Parth. Article 25. Okay, Article 25 is the correct answer. Article 15 किसने बोला था? बीच में Article 15 किस चीज के लिए होता है? Ma'am, I got confused हाँ, between that's what. 25 and 15, sorry. This is religious freedom they are asking. So religious freedom is Article 25. Article 15 जो है वो होता है religious के लिए caste और सेक्स और प्लेस place ऑफ of बर्थ birth. के लिए. Correct. And Article 25 is for religious freedom, means whichever religion you are born into, you can follow that. And even if you want to follow any other religion, you can follow that. जो भी religion आपको by birth मिला है, वो तो आप कर सकते हो follow. But अगर उसके बाद भी आपको लगता है कुछ और religion follow करना है, तो you can follow that religion also. Freedom of religion में वो आता है. ठीक है, and that is Article 25. Please remember. Next question. Which of the following is not... These type of questions are a bit confusing, huh, children? Which of It the is a following is subject. not a correct statement? I just want some other student to give the answer. Wait, Rutuja, please wait. I want some other students to give the answer. Yash Patil. Are you there? Yash. Yash. Ma'am, B. It is a subject to reasonable restrictions. Not a correct statement with respect to the freedom of speech. Okay. And expression in India. Not a correct statement पूछा है. Yash, Shaurya Raut, Sarthak. Yes, ma'am. Please speak out, बेटा. Answer दो. चले answer wrong होगा तभी चलेगा, but try something. Shaurya, Yes, ma'am. बोलिए आंसर आपका क्या है आंसर? Yes, ma'am. Ma'am, I think it is option B. It is subject to reasonable restrictions. Subject to reasonable restrictions. Okay. What about Yash? Yash? Yash, are you there, beta? Atharva? Yes, ma'am. I think, ma'am, it's B. Okay, fine. Everybody is thinking B. Please go through the question again, dear. Which of the following is not a correct statement with respect to the freedom of speech and expression? Sorry, ma'am. Option I A. think, ma'am, it would be option A. Absolute right. Yes, the correct answer is Because option A. It is because an it is a absolute. fundamental right. Correct. Mm. Not a correct statement पूछा है आप लोगों को. कौन सा statement correct नहीं है? With respect to freedom of speech, it is an absolute right. Understood? Yes, ma'am. So what explanation they have given over here? See this. Freedom of speech and expression in India is subject to reasonable restriction and it is not an absolute right. Okay. So the next question, again on the basis of article. Sahil, सार्थक आणि कोण आहे? Article 17. Among the following article of the Constitution of India abolishes untouchability. Untouchability. Article Article 17. 17A. Article 17A. Article 17A. Article 17. Only Article 17.
Article 17. I 17. think it is Article 17. Abolishes untouchability. Okay. Ma'am, Article 17. Corrected. Article 17 is the correct answer. Article 17 in the Constitution says that untouchability is forbid. Okay, practice from any means it's like a offense if you'll do this practice of untouchability. Untouchability पता है सबको क्या है? Yes, What do you mean Yes, by ma'am. untouchability? Um, No, is it there? Discriminate in lower ma'am, caste the and operation not which giving them the equal higher rights. Some when British government was there, and before that uh, also some people used to ma'am, discriminate on the the basis of caste. Yes. Go ahead. Who was talking that? ma'am, बोलो बेटा. ma'am, it forbade its practice. Ma'am, the Article 17 abolished untouchability, forbade its practice in any form, made enforcement of any disability arising out of untouchability. The, that is, ma'am, in simple words, that is what the higher caste people disrespect and discriminated the Dalits and other scheduled caste. अनटचेबिलिटी वो हिंदी में अछूत बोला जाता, वो लोगों को हाथ नहीं लगाया करते थे, या फिर उनको इतना डिमांड नहीं था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता, राइट? अभी ये सारी चीजें नहीं होती है ना? कहीं किसी रेयरली कुछ गांव में, या फिर अभी भी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते हैं वो लोग अभी भी थोड़ा बहुत ये बिलीव करते हैं, बट पर्सनली सिटीज में ये सब कुछ करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है. एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड. तो ट्रेन में जाना आना, ऑफिस में इतने सारे लोगों के साथ काम करना, सो नोबडी हैज द टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स, एंड इट इज नाउ ऑफेंसिबल आल्सो. करेक्ट? किसी को उसके कास्ट के ऊपर से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. Okay, so we'll move on towards the next question. What are the fundamental rights of people? Fundamental right of people. Okay, जनता, लोगों के लिए, हमारे लिए क्या rights Rights है? granted by Constitution Rights to granted by individuals. the Constitution to D. individuals. To individuals. Correct. People बोला है तो हम correct. यहाँ पे first option में if you'll see, they are saying society. Third में Ma'am, the official rights बोला है, guaranteed by the emergency. Constitution to individuals. Correct. This will be the correct answer. Because individual word, individual they are saying, and individual means we people. Guarantee rights guaranteed by the Constitution to individual. हमारा Constitution ये हमें गारंटी देता है कि हमारे जो rights है वो हमें मिल जाएंगे. Okay. Okay, we'll move on to the next question. Who gave the fundamental rights? The Option The Constitution of Constitution the of India. Constitution of India. India. Constitution of India. Correct. Don't get confused over here again. Who gave the fundamental rights? See, fundamental rights बनाए किसने वो अलग बात है. ठीक है, वो इन्वॉल्व कौन था उस वक्त में वो अलग बात है. Again, who was on the authority or maybe on the position that time, that is also different thing. But who gave? किसने दिया है हमें fundamental rights? Dr. B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, or the Constitution of India? So answer will be Option D. D. The Constitution of India. Constitution of India, है ना? हमारा संविधान है जिन्होंने हमें ये राइट्स दिए हैं. ठीक आहे. फंडामेंटल राईट. फंडामेंटल राईट्सला मराठीत काय म्हणतात माहितीये तुम्हाला? अधिकार. Ma'am, fundamental means the very essential and the something
which is very essential for anything which for its good. फंडामेंटल म्हणजे बेसिक. Okay. I'm not able to explain right now correctly, but it is a very essential part of something Okay. for which by which it the a thing could run properly. Okay, fine. That's great. फंडामेंटल राईट्सला म्हणतात Yes. मूलभूत अधिकार. ओके, फंडामेंटल राइट्स मीन्स बेसिक जो राइट्स है हमारे, मूलभूत हक्क म्हणतात त्याला, मूलभूत हक्क, मूलभूत अधिकार. That is called fundamental rights. Fine. So next question is there on your screen. Please read it carefully and then decide answer. I want some other student to give the answer. Yash, can you please unmute yourself and give the answer, dear? Yash Patil. And who has not given answer yet? Shaurya is okay. Shaurya is there. Sahil, Yes, ma'am. try this answer, beta. Who is the custodian of fundamental rights? Argument. Who is the custodian of fundamental rights? Sahil, Yash Patil. Supreme Court. Supreme Court. C. Supreme Court. Try to understand the meaning. Okay. Who is the custodian? मतलब संरक्षण कौन करता है हमारा? Custodian who has the right to change something and to preserve something. Custodian means the person or a body who has right to save and preserve something. Exactly. Custodian means to have the right save to or change something. preserve. Okay. So Supreme Court is the correct answer because Supreme Court has the authority that it acts as a custodian to the fundamental rights and ensure their protection and enforcement. हमें संरक्षण करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, राइट? फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण करने का, उसको प्रिजर्व करने का राइट्स किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास. What is Article 51A? Fundamental duties. Fundamental duties option C. 51A. Right to equality, Fundamental directive duties, principles C. of state policy, fundamental duties, and right to freedom of speech. Fundamental duties. Fundamental duties. Correct. The correct answer is fundamental duties. Article 51A says that it is related with the fundamental duties. Fine. Fundamental duties means what? We should respect our national flag, national anthem. Correct? That is our fundamental duties. And 51B is also there, huh? 51B. Article 51B is also there. And 51C is also there. So please don't get confused. In Article 51A and 51B. And Article 51C. Article 51A, 51B, 51C. 51A deals with fundamental duties of citizens. Okay. Next, what is Article 21 related to? Article 21.
Rights to life and Ma'am, personal option B. liberty. B. Right to life and personal liberty. Okay. Personal liberty. Right. Right to equality नहीं है. Right to life and personal liberty is Article 21. 21 is related to personal liberty. See, Article 21 protects the right to life of personal liberty. The person shall be deprived of their life or personal liberty except according to the procedure established by the law. Okay. Now next one is what is the 86th Amendment? Right to education made a Right to fundamental right. education made a fundamental right. A. Oh, that's great. 86th Amendment is very clear with the girls. What about boys? Come on, boys. Parth, be active in the class. Parth and Yash Patil, he is not answering. Shaurya, Ma'am, article honestly, I don't know this one. Option 1. option 1. Who gave that answer? I'm sure you're wrong. Okay, fine, no problem, Ita. That's why we are discussing all these things. When question will come, so that different answer, and you can remember all these questions and answer also. So 86th Amendment says that right to education made a fundamental right. See, right to education made a fundamental right मतलब सबको पढ़ाई करने का अधिकार दिया है. Okay, under fundamental right to education, under this amendment, every children, they can take basic education, right? Primary education from government. Okay, so government schools are there under RTE. They can take their education. 86th Amendment made right to education a fundamental right. Right to education is like a fundamental rights for children age 6 to 14. Okay, 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल में जा सकते हैं. आरटी के अंडर गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकते हैं. प्राइवेट स्कूल्स आर देयर. Those who can, I mean, some private schools are there. Those who are giving admission for RT students. Okay, RT के अंडर बाकी स्कूल में भी एडमिशन लिया जा सकता है, बट उसके लिए क्राइटेरिया होता है लाइक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड और मे बी कास्ट, वो देखा जाता है. एंड नियर बाय स्कूल दे विल प्रोवाइड. फाइन. Okay, next question. What is the 42 Amendment? See, that was 86th Amendment. Now this is 42. Please keep all these things in your notebook. Note it down properly. Amendment 42. What is Amendment 42? Answer D. Option D. D. Extensive Okay. amendment of constitution including changes in fundamental rights. Amendment to the Constitution, including the changes in fundamental right. Okay, anybody else? समाधान. वैष्णव, आज आवाज नाही आहे आपकी बेटा. धुळवड खेळायला चाललास की काय? वैष्णव, वैष्णव, समाधान. No answer. Okay, the answer which is given by Ritika and Sia, right? Sia only.
gave the Yes, answer, na? Sia and Ritika? Right. Sia and Ritika gave the correct answer. I don't know what is problem in the network. Maybe Vaishnav का तो है, थोड़ा problem आता है. Technical problem आता है. But what about other students? They are not giving answer. Student, please be active in the class, dear. Okay. So Amendment 42 says that extensive amendment to the Constitution, including changes in fundamental right. Fundamental rights में जो भी changes होगा, वो किसके अंदर अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, जो भी बदलाव होगा उसको चेंज करना पड़ता है. तो वो 42 अमेंडमेंट किस में होगा? फंडामेंटल राइट्स में. कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस होगा वो 42 के अंडर हो चुका है, होगा. ओके. सी जैसे टेक्नोलॉजी आती है, जैसे सोसाइटी बदलती है, जैसे नया कुछ आता है मार्केट में, कुछ चीजें अलग अलग चेंजेस होता है, उसके हिसाब से हमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं. जैसे पहले मोबाइल फोन नहीं थे, फाइन, तो उससे रिलेटेड लॉज भी नहीं थे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं थे. करेक्ट. जब मोबाइल आया तो उससे रिलेटेड इश्यूज आ गए, फिर उसके लिए लॉज बनाने पड़े. तो ये सारी चीजें अमेंड करना पड़ती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में. सो किसके अंडर क्या अमेंडमेंट होता है, दैट यू शुड रिमेम्बर प्रॉपरली. See, 42 amendment made several changes to the constitution. बहुत सारे changes constitution में यहाँ पे बनाए गए हैं, including modification to the fundamental right. Modification मतलब थोड़ा बहुत change करना. Okay, पूरा से बदल नहीं दिया है, modify कर दिया है उसको. And that modification is necessary because हर एक पहले के जैसा सब चीजें नहीं रहती है. Okay, next question. Which of the following statement is incorrect about fundamental rights? See, Option children, C. this type of question, now please don't get confused. I'm again and again requesting you, read question carefully. Incorrect they are saying about fundamental rights. Correct नहीं पूछा है, incorrect पूछा है. So बच्चे क्या करते हैं? Most of the time, children, they are reading the statement and they are, okay, fundamental rights say related to something and they will take it. No, please don't do like that. Incorrect statement कौन They सा है? are enforceable by the courts. Option C. option C. Correct, देखना. Option C. Okay. Let's see what option C says. Fundamental rights are absolute and cannot be restricted. हाँ, fundamental rights are absolute. मतलब वो जो है वैसे के वैसे, और उसको क्या कर सकते हैं? Cannot be restricted. मतलब उसको हम लोग. Ma'am, Yes. what about option D? They are available to both citizens and non-citizens. नॉन सिटीजन्स अगर है, इंडियन सिटीजन ही नहीं Yes, है, ma'am. तो उनके लिए कैसे एप्लीकेबल होगा फंडामेंटल राइट्स हमारा? Yes, ma'am. है ना. वोटिंग Ma'am, करने for का नहीं, मुझे बता. option B. नहीं, मुझे बता कि अगर आउट ऑफ कंट्री से कोई आता है तो वोटिंग करने का राइट्स मिला है हमें, वो वोट कर सकता है क्या वो बंदा यहाँ पे आके? No, ma'am. नहीं कर सकता. सो दिस ऑप्शन विल बी नॉट परफेक्ट. बट यहाँ पे इनकरेक्ट जो है, वो इनकरेक्ट जो बोला हुआ है, लाइक जो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या बता रहा है कि फंडामेंटल राइट्स है, एब्सोल्यूट है एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वो इनकरेक्ट है. Ma'am, what about B1? विच वन? बी. Yes, ma'am. अरे यहाँ पे हमें क्या देखना है? इनकरेक्ट कौन सा है वो देखना है ना. तो ये तो करेक्ट है. इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट. कोर्ट हमें फंडामेंटल राइट्स, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए तो वो कौन इन्फोर्स करेगा? कोर्ट ही करेगा. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिएबल, ये भी राइट है, एंड दे आर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन. नॉन सिटीजन का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ? Foreigners who come Who to are not, India to visit. Rare and who are low not the इधर official, बिल्कुल who are काम not के लिए. officially the citizen of India. हाँ, who are not official
सिटीजन ऑफ द इंडियन, राइट। तो ये सारे राइट्स जो है उनको वो राइट्स नहीं मिलेगा जो हमें मिलता है, फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स को तो ये मिलेगा पूरा राइट्स, नॉन सिटीजन्स को वो राइट नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी, अगर सपोज वो यहाँ पे रहते हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो जैसे नॉर्मली जो भी राइट बाकी के जो हमें मिलते हैं, या फिर यहाँ पे रहने के बाद इंडियन सिटीजन्स को मिलना चाहिए। वोटिंग करने का राइट तो नहीं होगा, बट नेचुरली अगर वो इंडियन भी है, एनआरआई को भी नहीं मिलेगा। वो कुछ राइट्स है जो उनको मिलेगा नहीं है, बट बाकी के सिटीजन के जैसा तो उनको रहना पड़ेगा, वो राइट्स तो निभाना पड़ेगा उनको, वो राइट्स तो मिलेगा। कि अगर जैसे मान लो फ्रीडम है, इंडिया में कहीं पे भी आके रह सकते हैं वो लोग, बाहर कंट्री से आने के बाद अगर उन्होंने प्रॉपर प्रॉपर वीजा वगैरह सब ये करके आए हैं, प्रोसीजर करके आए हैं, इफ दे आर कैरिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स करके इंडिया में आए हैं, तो वो यहाँ पे इंडिया में आ सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी आते हैं बहुत सारे लोग। एक इलेक्शन वगैरह, वोटिंग, वो सब राइट नहीं मिलेगा, बट कुछ राइट्स है जो नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो मिल रहा है। ओके, ये करेक्ट है, तो कुछ हद तक ये भी मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी रॉन्ग है ये ऑप्शन। सो आउट ऑफ दिस 3 ये बहुत क्लियर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब थोड़ा पार्ट इसमें से मिलता है, बट स्टिल इट इज नॉट इनकरेक्ट, बट दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो दिस आंसर इज, मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। इसका आंसर ये पूरा प्रॉपरली करेक्ट जा रहा है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स पूरा इनकरेक्ट है। ओके डियर, चलो आज बहुत कम बच्चों ने बात की है। आई वांट दीज अदर स्टूडेंट, पार्थ, पृथ्वीराज एंड ऋतुराज, और कौन है, शौर्य, हाँ शौर्य वाज एक्टिव इन द क्लास, यश पाटिल, these student please be active, okay? And as I told you, doctrine of lapse, then subsidy reliance, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के लिए के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो, रीड आउट year and everything, who was involved in that, which kind of a policy British government has Mom, introduced in India. Yeah. Mom, I have a doubt. Mom, which history is counted as the ancient history, and which history is counted as the modern history? Like, I have I'm a little bit confused between the year 1857 and 1957. Modern history Yes, and ma'am. Ancient history. okay, so we'll clear your doubt better, huh? Modern history and ancient history. Yes. After this again English lecture you need to join, but modern history and ancient history is like particular year that I will discuss with you, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक मॉडर्न हिस्ट्री है और Yes, एंशियंट ma'am. हिस्ट्री आता है। I'm confused. Okay, okay, we'll clear that doubt in the next Yes. session beta. Yes. Who was that, Ruturaj? Okay. Okay, Ruturaj, fine. So please join after this again English lecture. Okay, chalo, thank you, bye bye.